Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Aditi Vyas and in this video I'm going to teach you the call for chapter. Next topic that we have is the emergence of two power blocks. The two superpowers were keen on expanding their spheres of influence in different parts of the world. So, as we know, US and USSR were the two powers. अब इनकी पावर किस तरह से दिखेगी, शो कैसे करेंगे ये लोग जब इनके पास में बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूडेड होगी इनके अलाइज के रूप में. सो ये बहुत कीन थे, वो इनका इंटरेस्ट था एक्सपांड करने में इनके इन्फ्लुएंस को. So, in a world sharply divided between the two alliance systems, a state was supposed to remain tied to its protective superpower to limit the influence of the other superpower and its allies. Now, ये US है, ये USSR है. इनकी कुछ allies होगी, जैसे कि like, you know, Britain, UK मान लो for example. I don't know if this was part of NATO or not, but yeah. For example, this is UK and this is ally of USA. Here, if we take East Germany, I'm not getting any other example right now. So East Germany was ally of USSR and here West Germany was ally of USA. So this West Germany will be tied to USA because it will provide like protection to West Germany first of all, and it will also provide resources, money, etc. And in return, West Germany will be loyal to USA so that they can limit the authority or power of USSR. Similarly, East Germany will be loyal to USSR and will be obliged to USSR basically. Then the smaller state in the alliance used to link to the superpowers for their own purpose. Now why would these weak powers or small powers, a small state would be a better term, will ally with these two big powers? Because of their own purpose, because of their own benefit. They got the promise of protection from their enemies. If we see India के साथ इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो पाकिस्तान और चाइना से अच्छे नहीं है, ज़्यादा पाकिस्तान एंड चाइना के साथ अच्छे नहीं है. सिमिलरली हर एक कंट्री के उसके नेबर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी. Even though we know that Nepal and India are like good relations, like have good relations, but still there are so many of matter of confrontation between these two countries that should be read in chapter 4, I guess. So because of that, they got the promise of protection, weapons and economic aid against their local rivals. जो उनकी locality है, for example the area ASEAN, तो उनकी अंदर भी कोई rival powers वगैरह होगी. So for their own protection, they used to get allied with the big powers. Then mostly regional neighbors with whom they had rivalries, as Pakistan India का है. The alliance system led by the two superpowers therefore threatened to divide the entire world into two camps. जो पूरा alliance system है वो एक तरह से world को दो powers में और पूरे दो camps में divide करता है. एक हो गया western camp and एक हो गया eastern camp, यानी कि USSR का और ये USA का. Most countries of West Europe sided with the US and those of Eastern Europe joined the Soviet camp. This is why these were also called as Western and the Eastern alliances. So this is the Europe. Here the West Europe is with USA or the member of NATO, and the East Europe is alliance of USSR, or we can say that the part of Warsaw Pact. Okay? What is NATO and what is Warsaw Pact we will study in the foregoing part. Okay? So now the Western Alliance was formalized into an organization that is the North Atlantic Treaty Organization, which came into existence in April 1949. NATO 1949 में बना, जो कि था US का अलायंस. इसमें लाइक उसकी जितनी भी अलायंस थी वो ज्वाइन किए थे नेटो को. सिमिलरली वॉर्सो पैक्ट बना था 1955 में फॉर यूएसएसआर ने बनाया था कुल मिला के, एंड उसमें इनकी अलाइंस जो यूएसएसआर की अलाइंस थी वो ज्वाइन थी. अब एनी गेसेस व्हाई इसका नाम वॉर्सो पैक्ट रखा गया था? लेट मी टेल यू. हियर समवेयर इज पोलैंड एंड उसकी कैपिटल है वॉर्सो. For that, I suppose that meeting यहाँ हुई होगी, and that is why this pact is known as Warsaw Pact. So yeah, I think this is the reason.
Then the Eastern Alliance, known as we were here. It was an association of 12 states which declared that armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them. So जो NATO था वो 12 स्टेट का एसोसिएशन था जिसमें किसी एक कंट्री के ऊपर अगर अटैक होगा तो वो पूरी जो यूरोप है और नॉर्थ अमेरिका है उसकी कंट्रीज़ मिल करके उस पर वापस अटैक करेगी. ठीक है. सो ईच स्टेट वुड बी ऑब्लाइज टू हेल्प दी अदर. सो वो एक उसकी हेल्प करेंगे बेसिकली. जो वॉर्सो पैक्ट था, जो ईस्टर्न अलायंस भी कहते हैं, was led by Soviet Union. It was created in 1955, as I told you, and its principle was to the principal function was to counter NATO's forces in Europe. So basically counter attack करना NATO के forces को, right? Then international alliances during the Cold War were determined by the requirement of the superpowers and the calculations of the small state. As noted above, Europe became the main arena of conflict between the superpowers. In some cases, the superpowers use their military power to bring countries into their respective alliance. So many times these superpowers use military to, accommodate more powers or more allies basically. Soviet intervention in East European countries is an example. There were so many wars, like जैसे कि वियतनाम वॉर हो गया, अफ़गानिस्तान वॉर हो गया. So वो उनमें इंटरफेरेंस करती क्यों है? ताकि उनका जो से है, उनकी जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ पावे. And the Soviet Union used its influence in East Europe, backed by the very large presence of the armies in the countries of the region, to ensure that the eastern half of the Europe remained within the spheres of influence. In East and Southeast Asia and in the West Asia, the USA built an alliance system called NATO and CENTO. हमने बात कर ली NATO and वॉर्सो पैक्ट की. इनके अलावा भी अब जो सेंट्रल एशिया है और साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे यूएसए ने बनाए दो और अलायंसेस, सीएटो एंड सेंटो. साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, राइट. सो आई थिंक पाकिस्तान ने भी इन दोनों को ज्वाइन किया था इन समवट 1974 के आसपास, लाइक 1974 के आसपास. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक USA was against India in some terms. So the Soviet Union, अब ये USA ने अलाइंस बनाई, सेंट्रल एशिया तक पहुँच गया वो, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया. तो अब USSR भी कम नहीं, वो भी कुछ ना कुछ करेगा. तो उसने अलाइंस बनाई चाइना के साथ में, एंड साथ ही साथ नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक. ठीक है. सो ये USSR है, इसकी अलाइंस कहाँ गई? चाइना, वियतनाम, North Korea and Iraq, right? Now हमने पहले पढ़ लिया the Cold War threatened to divide the world into two alliances. Under these circumstances, many of the newly independent countries, after gaining their independence from the colonial powers such as Britain and France, were worried that they would lose their freedom as soon as they gained formal independence. So अब जो नई कंट्रीज़ इमर्ज हुई, जैसे कि इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया हो गई, इंडोनेशिया हो गई एंड मैनी अदर कंट्रीज़, वो सब अब वरीड थे बिकॉज USSR और जो USA था वो बहुत फोर्स कर रहा था दूसरी कंट्रीज़ को कि उनकी पावर उनकी अलायंस में आके मिले वो. तो इस वजह से दे वर वरीड. सो क्रैक्स एंड स्प्लिट्स की अलायंसेस वर क्विक टू अपीयर. अब जो अलायंस था इनका खुद का, इस USSR का हो गया वॉर्सो पैक्ट एंड USA का था NATO, उसमें भी क्रैक्स हमको दिखने लग गए थे, स्प्लिट्स वगैरह. जैसे कि चाइना और जो सोवियत यूनियन है उसका झगड़ा हो गया था बीच में, कुछ उनके बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया था, और उसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आगे कुछ ना कुछ उसके बारे में कि जो 1959 के आसपास, 54 एक्चुअली, जब USSR के कुछ एम्प्लॉयज़ वगैरह चाइना गए हुए थे फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. चाइना के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए USSR ने उनके कुछ एम्प्लॉयज़ वगैरह भेजे थे. फिर से उन्होंने बुला लिए 1954 के वॉर के बाद में. 54 में वॉर नहीं हुआ था ऐसा कुछ, बट हाँ डिस्प्यूट वगैरह हुए थे. तो उसके चलते फिर से जो प्रोफेशनल्स थे बेसिकली उनको बुला लिया गया था बाय USSR. व्हाट आई एम राइटिंग. सो ये सब हो गया. ठीक है. देन द अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉज द नॉन अलाइनमेंट. नॉन अलाइनमेंट बेसिकली मीन्स द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़. इट गिव अ वे टू न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ to stay out of the alliances. ठीक है.
ताकि वो किसी भी अलायंस से जुड़े ना और एक इंडिपेंडेंट बन के रह सके, खुद की सोवरेनिटी को किसी भी दासी ना बनाए, लाइक व्हाट डू वी कॉल दैट, या सेम। देन यू मे आस्क व्हाई द सुपर पावर्स नीडेड एनी अलायंस आफ्टर ऑल। वो तो इतनी बड़ी पावर्स है, उनको क्या ज़रूरत है अलायंस की? This was because these superpowers needed vital resources, territory and location and economic support. So vital resources जैसे oil हो गया, minerals हो गए. We all know that जो वेस्ट एशिया है वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स, नेचुरल केसेस हमको मिलती हैं. सो वो उस वक्त सोवियत यूनियन के अलाइज हैं. सो इस वजह से सोवियत यूनियन को ऑब्वियस सी बात है उनसे वो रिसोर्सेज है वो मिलेंगे. So for vital resources, can is the territory from where they could launch weapons and their troops. ठीक है. सो जैसे क्यूबा हो गया, वहाँ पे यूएसएसआर ने, इस साइड में जब भी क्यूबा आता है वहाँ पे यूएसएसआर ने उनके बेसिस वगैरह लगा दिए थे, मिलिट्री बेस, जिसकी वजह से यूएस जो था वो एक तरह से थ्रेट में आ गया था. हम अभी क्यूबी मिसाइल क्राइसिस में पढ़ेंगे इसको. ठीक है. सो टेरिटरी हो गया, लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर, लोकेशन जिससे वो स्पाई कर सके एक दूसरे के ऊपर, और इकोनॉमिक सपोर्ट एज दीज स्मॉल अलायंस टुगेदर कुड हेल्प इन द मिलिट्री एक्सपेंसेस. ठीक है. देन एक आइडियोलॉजिकल रीज़न भी था. अगर वी नो दैट यूएस जो है एंड जो यूएसएसआर है, यूएस की आइडियोलॉजी है लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म. सो जितनी जिसकी अलाइज होगी, अगर मान लो 50 कंट्रीज इसके साथ में है, सोवियत यूनियन के साथ में, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी पावर बढ़ेगी. इनकी अगर सिर्फ 35 कंट्रीज़ है तो मतलब कम्युनिज्म जीतेगा कुल मिला के. लेकिन अगर 75 कंट्रीज़ अगर यूएस के साइड हो गई, यानी कैपिटलिज्म की कंट्री में फॉलो होता है, तो कैपिटलिज्म जो है वो एक तरह से बढ़ जाएगा, उसका इन्फ्लुएंस हो जाएगा. सो इस वजह से एक आइडियोलॉजिकल रीज़न भी था, जो कि लॉयल्टी ऑफ द अलाइज suggested that the superpowers were winning the war of ideas as well. The liberal democracy and capitalism were better than the communism and socialism और vice versa. अगर जिसके ज़्यादा अलाइज वगैरह हैं एंड जहाँ पे जो आइडियोलॉजी फॉलो होती है कम्युनिज्म या फिर कैपिटलिज्म, तो वो एक तरह से विनर बनेगा जो ज़्यादा. ठीक है. इतना सही है इसमें. So I hope you like this video. If you did, then don't forget to like and comment on my video, and also don't forget to subscribe my channel. All the very best.